conversations we are aiming at. As you all know, I will repeat again what we are trying to do is that this year is the 75th year of India's independence. We are using this opportunity and an attempt to initiate a process of creating the information repository for the sector. That includes, a lot of data we are trying to search from here and there, what people have done, what sector has done in the last 75 years. Unfortunately, the narrative of our sector is so, either it is against the sector or it's very incomplete, that we don't get data at one place that what we have done in the last 75 years. We see results. All of us enjoy the outcome of the work of the sector which we have done in the last 75 years. But it is not documented at one place. So the story, basically, you will find either the story says that yes, it has been done, but who has done it is missing. So we have started this series on various formats. We are making short video films. We are doing documentation through thematic networks on education, health, student issue, livelihood. And also we started this lecture series by, eminent people. We are using Zoom and we are recording it also, because then we will have a repository which people can read and see whenever they want to see about this sector. We have seen that most of the time when journalists wants to write anything, they don't get data. So many times they reinforce the, the lack of information which is already there in the social system around us. So therefore, actually, I'm sitting in a school, so you'll find some disturbance, but definitely you'll excuse me for that. But this is a conversation we are doing regarding today's conversation, because I have been visiting Uttar Pradesh for quite some time, and whenever I visit, I came to know about the excellent work done by HDFC. All companies are doing good work and interesting, but HDFC, I found it very interesting, especially when I went to SSK last time. And I was talking to Ashok Bhai, and he was telling me that how HDFC has engaged the civil society organization in a very constructive way. Because again, in today's time, there is also a lot of confusion about the relationship between private sector and the development sector. It was VANI in 2011 when the first time we invited corporate sector in our AGM. Those days, this concept of CSR was not there. But there was a lot of engagement of private sector in our sector. So we were trying to talk about that. I also want to initiate a conversation through Mr. Ritesh, is that last 2 years there was a crisis. There was a emergency situation. CSR and private sector, CSR and NGOs work together to provide relief to unprecedented scale of people and unprecedented scale of the crisis. What are our lessons? What we can do in future? And what are his opinion and suggestions that how we can work together as both of us? Because now CSR is not what CSR was initially 5 years back. Now CSR has taken a lot of shape. They have gone through a lot of experiences along with us. COVID has given a very nice shock treatment to all of us, in fact. So I want to understand on behalf of the sector that how he thinks that sector should work, change itself, how we can present ourselves and how we can learn from each other to create a more better quality of life for the people in India. So this is our background in which we want to have this conversation. I would also add one additional point with Mr. Ritesh that HDFC does excellent work. But do he feel some point of time that rather than quantifiable, measurable service delivery projects, he has to also, there is a gap about the capacity building or strengthening the sector, voluntary sector of CSOs. So these are my observations. Shabin ji thoda lamba bol gaya, but I don't want to miss the opportunity of learning from Ritesh and also from the people in today's meeting. I can see we have excellent people in this meeting. So that's my background observation and suggestions. Thank you, Shabin ji. Thank you, Ritesh. 1 minute. May I request everybody to check their mics mute रखें please, क्योंकि बहुत disturbance आ रही है. सब लोग please check करें किसी एक का mic open है और बाहर की आवाज आ रही है. Thank you. जी Ritesh ji, now the floor is yours.
Thank you so much, Shabin ji, and thank you really very much, Harsh ji, for setting the context and inviting me to share my thoughts in this August audience. I was looking at the number of people and from the different sector or from the different geographies, at least people have joined. तो वो देखकर काफी अच्छा लग रहा है, and thanks for the compliments for the bank, particularly if you have seen our work in UP. I take that as a feedback. And one more point that you have raised is on how do we increase the capacities of the voluntary sector or CSOs is something that is a food for thought for us. So Shabin ji, Hindi ya English ya mixed, what is the preferred source? Mixed is better, sir. Ji. Mixed. So may I request my colleague Janvi to start sharing the screen, please? Thank you, Janvi. Can everyone see the slide? Yes, we can see. Yes, sir. Yeah. Great. So greetings to everyone, and thank you for joining. I hope I will live up to your expectations, and while I share the presentation with you all. तो इससे पहले कि मैं slides के बारे में discuss करूं, the more important aspect here is how CSR has shaped up in the country. तो एक I would say the landmark duration is when the Companies Act basically made it mandatory for companies to spend 2% of their average net profits on CSR activities. उसके वजह से काफी changes अपने sector में आया है. बहुत सारे companies पहले से भी कर रही थी. Last 2 decades से मैं as an individual CSR sector में ही काम कर रहा हूँ. I worked with a lot of companies, CSR and communications and stakeholder practices के लिए. लेकिन थोड़ा एक channelize हुआ है efforts, particularly in last 7-8 years after the Companies Act had been promulgated. जो आज का topic है वो collaboration in a crisis situation. तो मेरा जो presentation है वो essentially 3 parts में divided है. एक तो मैं 10 से 12 मिनट में थोड़ा बताना चाहूँगा कि हम लोग बैंक के अंदर किस तरीके से अपने CSR को approach करते हैं, और उसके बाद थोड़ा क्राइसिस के बारे में बोलना चाहता हूँ. उसके अंदर दो महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो है कि क्राइसिस में हम क्या नहीं कर सकते, वो भी जानना बहुत जरूरी है. बिकॉज अदरवाइज क्या होता है कि वो पूरा चैनलाइज्ड एफर्ट्स हो नहीं पाता और रिसोर्स वेस्ट हो सकता है क्राइसिस के टाइम पे. तो उसमें क्या नहीं कर सकते या क्या अप्रोच हम लोगों को कैपेसिटी या स्किल्स उस तरीके की नहीं है कि हम लोग उसको कर पाएंगे. तो वो एक सेल्फ कॉन्शियसनेस जरूरी होता है. और एक स्ट्रक्चर्ड रिप्लाई और रिस्पॉन्स टू क्राइसिस का मैं एक एग्जांपल उदाहरण कोविड के टाइम का एंड व्हाट द बैंक डिड उसके बारे में ये चर्चा करूंगा. तो अनदर 30 to 35 मिनट्स के अंदर में मैं कोशिश करूंगा कि मैं इन तीनों विषयों को कवर कर सकूं. एंड देन वी विल ओपन द फ्लोर. प्लीज फील फ्री टू इंटरप्ट एंड आस्क क्वेश्चंस. It could be related to what I am presenting, it could be related to anything else, but related to this particular agenda for today. So I will try to respond to the best of my abilities. So HDFC Bank's CSR is defined as Parivartan, that is our motto. And basically we are looking at transforming the lives of millions of people in India. Socio-economic development, empowerment of communities, lot of interventions are basically planned across the country. Now, HDFC Bank is a pan-India organization. So, and I hope all of you would know about the bank. So, with the nature of our business, भारत के सभी कोनों में हमारा अस्तित्व है, तो उसके वजह से हमारा CSR सेक्टर और CSR का जो अप्रोच है वो नेशनल लेवल पे है. And therefore we have projects virtually across all states and union territories in the country. किसी न किसी शेप में, किसी न किसी फॉर्म में हम अपने CSR को लेकर भारत के सभी कोनों में मौजूद हैं. नेक्स्ट स्लाइड. हमारे 6 फोकस एरियाज हैं जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है. स्किल डेवलपमेंट एंड लाइवलीहुड एनहांसमेंट, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट,
एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी है, एजुकेशन का प्रमोशन, हेल्थ एंड हाइजीन with a larger focus on sanitation and financial literacy and inclusion. ये 6 themes पे हम लोग काम करते हैं. नेक्स्ट. और 3 तरीके के प्रोजेक्ट्स में हम लोग काम करते हैं. फर्स्ट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट इज व्हाट वी कॉल्ड होलिस्टिक रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट. तो टिपिकली एक कॉन्टिग्यूअस सेट ऑफ विलेजेस, आइडियल साइज जो है 15 विलेजेस का एक क्लस्टर बनाते हैं. 10 से कम का क्लस्टर को ज्यादा प्रेफर नहीं करते और 25 से ज्यादा का विलेज का क्लस्टर को प्रेफर नहीं करते. तो विद इन दैट रेंज, बट मीडियन रेंज अगर बात करेंगे तो करीब 15 विलेजेस का हमारा क्लस्टर रहता है. एंड वी डू अ नीड्स असेसमेंट, मैप इट अगेंस्ट द थीमेटिक एरियाज, मैप इट अगेंस्ट द गोल्स. गोल्स के बारे में मैं आगे वाले स्लाइड्स में बताऊंगा. एंड फिर उसका एक एक्शन प्लान बनाते हैं विच इज फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 3 to 4 years. आप सभी को मालूम है दैट अ प्रोजेक्ट शुड बी फिनिश्ड विद इन 4 फाइनेंशियल ईयर्स. तो वो एक हमारा गाइडलाइन है एज फार एज टाइम लाइन्स आर कंसर्न. तो मैक्सिमम 4 फाइनेंशियल ईयर्स तक हम एक प्रोजेक्ट का डिजाइन बनाते हैं और वो पूरे 4 ईयर्स में अक्रॉस ऑल दी गोल्स, अक्रॉस ऑल दी थीमेटिक एरियाज, बेस्ड ऑन दी लोकल नीड्स एक प्लान ऑफ एक्शन तैयार करके उसको इम्प्लीमेंट करते हैं. हमारे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स आज के फोरम में मैं देख रहा हूँ हमारे इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर्स से भी आए हैं. तो और वो इन सभी में से HRDP प्रोजेक्ट के भी इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर्स हैं, फोकस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के भी पार्टनर्स हैं. तो मैं फोकस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा बताता हूँ. इट्स अ क्लस्टर बेस्ड अप्रोच. तो एक पर्टिकुलर थीमेटिक एरिया और एक पर्टिकुलर गोल पर हम लोग काम करते हैं. दैट इज अ सेंट्रल गोल ऑफ द प्रोजेक्ट. तो बहुत फोकस्ड तरीके से काम करते हैं. होलिस्टिक और फोकस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बीच में 2 बेसिक डिफरेंस है. होलिस्टिक सभी तरीके के गोल्स को नीड के बेसिस पे एड्रेस करता है. फोकस्ड एक सेंट्रल गोल जो होता है उसको एड्रेस करता है और 1-2 सब्सिडियरी गोल्स उसके साथ एड्रेस हो सकते हैं जो उसके साथ लिंक्ड हो. तो बट फोकस का जो ज्योग्राफी होता है वो ज्यादा भी हो सकता है. इट इज नॉट लिमिटेड टू 10-15 विलेजेस. इट कुड बी 100 विलेजेस, इट कुड बी 200 विलेजेस, इट कुड बी क्लस्टर्स एंड पॉकेट्स ऑफ 20 विलेजेस इन 10 डिफरेंट स्टेट्स. इस तरीके के भी प्रोजेक्ट्स हमारे साथ डिजाइन होते हैं. स्पेशल प्रोजेक्ट्स है जो कभी वन टाइम सपोर्ट की जरूरत होती है, पर्टिकुलरली डिजास्टर रिस्पॉन्स के टाइम में. तो वो हम लोग स्पेशल प्रोजेक्ट के तरीके से लेते हैं. It could be short term. Some of the special projects could be long term also. Next slide. तो अभी किसी का कोई प्रश्न है? Does anyone have a question right now? Okay, so I will proceed to introducing the HDFC Bank's Parivartan's vision for 2025, and these are the goals that you see. बहुत टेंजिबल गोल्स हैं, बहुत टाइमलाइंस. एज यू सी 2025 तक हमने ये अचीव करना है. फर्स्ट गोल, हमारी 7 गोल्स हैं और 7 गोल्स के अंदर में देयर आर 16 सब गोल्स. फर्स्ट गोल इज इंक्रीज इन बेनिफिशियरी इनकम. 5 लाख फार्मर्स का इंक्रीज इन इनकम हमें सुनिश्चित करना है. दैट इज एन इंटरनल टारगेट दैट वी हैव सेट फॉर आवरसेल्व्स. सेकेंड इज कम्युनिटी लेड एंटरप्राइजेस, जिसमें कम से कम 50% जो एंटरप्राइज प्रमोट हो रही हैं वो विमेन लेड हों. नाउ दीज एंटरप्राइजेस कुड बी ग्रुप एंटरप्राइजेस, इट कुड बी इंडिविजुअल एंटरप्राइजेस ऑल्सो. तो ऐसे कम्युनिटी एंटरप्राइजेस को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं. और थर्ड गोल अंडर इंक्रीज इन इनकम इज स्किल ट्रेनिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. जो हमारे पास जो ट्रेड्स हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं दैट वेरीज फ्रॉम अ पीरियड ऑफ 2 months to a period of 3 years also, depending on the kind of trade one is going for the skill training. तो ऐसे ट्रेड्स को हम लोग सपोर्ट करते हैं और फिर वो उनको एम्प्लॉयमेंट से लिंक करते हैं. इन तीनों के बारे में 2-3 महत्वपूर्ण जो बातें हैं हमारी प्लानिंग के अंदर में, कि जब हम फार्मर्स की बात करते हैं तो हम लैंडलेस लोगों को भी फार्मर कंसिडर करते हैं. दिस इज आवर ओन डेफिनेशन. जो शेयर्ड क्रॉपिंग कर रहे हैं या लीज्ड लैंड पे काम कर रहे हैं या होमस्टेड लैंड पे भी काम कर रहे हैं तो हम लोग उसको फार्मर कंसिडर करते हैं. एग्री एंड अलाइड एक्टिविटीज में हम लोग एंड टू एंड उनको सपोर्ट करने का कोशिश करते हैं. कम्युनिटी लेड एंटरप्राइजेस के अंदर में पूरा बिजनेस प्लानिंग से लेकर के कैपेसिटी बिल्डिंग, मैनेजमेंट स्किल्स. तो इसीलिए
और फिर उसको एक्सेस टू कैपिटल, 4 मॉडल्स, 4 चीजों का बेसिकली सम्मिलित करके ये पूरा प्लान बनता है, वेयर देयर इज अ डाउन पेमेंट थिंग। तो एक कम्युनिटी इंटरप्राइज जो कर रहे हैं, या तो ग्रुप के लोग या इंडिविजुअल्स कर रहे हैं, दे शुड पुट इन सम मनी एज डाउन पेमेंट। इट कुड बी 2% ऑफ देयर टोटल वैल्यू। कहीं एक्सेप्शन हो सकता है जहां पर कुछ भी नहीं लगा पाते हैं, तो ऐसा नहीं कि उनको हम लोग, बिकॉज लेट्स से वेरी अल्ट्रा पुअर फैमिलीज हैं और वो दे कैन नॉट पुट इन सम मनी, देन वी विल ऑफ कोर्स कंसिडर दैट। सो डाउन पेमेंट, लोन, सब्सिडी, ग्रांट, क्योंकि टोटल ग्रांट ड्रिवन अप्रोच में वो सस्टेन नहीं करेगा। ज्यादातर फोकस होना चाहिए इंस्टीट्यूशन क्रिएशन का, उसके बिजनेस प्लानिंग का, उसके मार्केट लिंकेजेस का, अकाउंटिंग प्रोसेसेस, कॉम्प्लायंस इश्यूज। तो ये काफी इन डेप्थ रोल हमारा रहता है। तो देयरफॉर दीज प्रोजेक्ट्स आर आल्सो फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन, क्योंकि आप 2-3 महीने के अंदर में ये स्किल्स इम्पार्ट करके नहीं निकल सकते। सो सेटिंग अप ऑफ द इंटरप्राइज इज द इजीएस्ट ऑफ द डिलीवरेबल, बिकॉज आप इंफ्रा क्रिएट कर दोगे, इंफ्रा क्रिएट करके हैंड होल्ड कर देंगे थोड़े दिनों तक, वर्किंग कैपिटल का प्रोविजन कर देंगे, but that will not basically lead to the results, because this community needs to run it on their own. It cannot be dependent on any implementing agency or any corporate. तो उनको खुद से मार्केट को कैसे पहुंचा जाए, बिजनेस प्लानिंग, प्राइसिंग मैकेनिज्म कैसे होना चाहिए, होल्डिंग कैपेसिटी कैसी होनी चाहिए, व्हाट इज द सीजनैलिटी ऑफ द प्रोडक्ट that is going to be sold to the market. तो ये सब चीजों का बहुत इन डेप्थ ट्रेनिंग is inbuilt into the project. And skill training, of course, as I said, मास स्केल की स्किल ट्रेनिंग होती है, जैसे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री हो गया या अदर सिमिलर इंडस्ट्रीज हो गया, जीडीए की ट्रेनिंग करते हैं, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट्स की। एंड देयर आर सम वेरी निश एरियाज आल्सो, लाइक 3 years की नर्सिंग कोर्स की भी ट्रेनिंग हो रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग के सेक्टर में आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज फॉर 12th पास आउट्स और 12th ड्रॉप आउट्स बच्चों को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग में जॉब अपॉर्चुनिटीज ढूंढ करके उससे कैसे लिंक करें, और ऐसे कैसे क्यूरेटेड ट्रेनिंग डिजाइन करके इम्प्लीमेंट करें। सो दैट इज आल्सो देयर। ग्रीन जॉब इंडस्ट्री which is starting to evolve, and there is a lot of scope in future. तो वो फ्यूचरिस्टिक जॉब्स के लिए हम लोग किस तरीके से उनको ट्रेनिंग्स इम्पार्ट करें और उसकी मार्केट लिंकेजेस, प्लेसमेंट लिंकेजेस एस्टैब्लिश करेंगे। सो ऑल ऑफ दिस are there as part of the goal. Please note that we do not implement anything directly. We implement only through NGO partners. Currently, we are working with more than 115 NGOs in the country. हमारा सेकेंड गोल अगर आप देखेंगे तो सस्टेनेबल कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन। नाउ दिस इज अ गोल विच इज ओवरराइडिंग ऑल द गोल्स। ये एक प्रोसेस का गोल है, बट हमने इसको सेपरेट एक अपने लिए गोल और सब गोल और टारगेट इसके लिए रखा, बिकॉज वी वांट टू एम्फेसाइज ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस गोल, क्योंकि मॉडल्स वोंट सस्टेन इफ द कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। सिंपल एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देख लो कि हमने 3-4 साल तक एक विलेज में इम्प्लीमेंटेशन किया थ्रू एनजीओ पार्टनर, एंड देयर हैज टू बी एन एग्जिट स्ट्रेटेजी। तो एग्जिट स्ट्रेटेजी क्या होगी, कौन उसको हैंड होल्ड करेगा। तो जो एसेट्स क्रिएट हो रही हैं, जो प्रोसेसेस क्रिएट हुए हैं कम्युनिटी में, समवन विल नीड टू कंटिन्यू एंड नॉट ओनली सेल्फ सस्टेन बट सेल्फ प्रोग्रेस ऑल्सो, बिल्ड ऑन व्हाट इज देयर, एंड देन अकॉर्डिंगली वो उसमें और तरक्की कैसे कर सकें। तो उसके लिए वो कम्युनिटी इंस्टीट्यूशंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। HRDP के अंदर में इट इज मैंडेटरी to have a village development committee which is a proper representation from all sectors of the society in the village. तो उसके वो VDCs हैं, वो empower होनी चाहिए, वो decision making का पार्ट होना चाहिए, वो planning के भी पार्ट होना चाहिए। So वो सब चीजों के वजह से we have kept this as a goal. थर्ड गोल के जो क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं, इसके अंदर there are 3 sub goals. The first sub goal is 2,500 smart government schools. ये रीच लेवल गोल है. This is an experimentation we are currently doing. कि 2,500 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट टीचिंग लर्निंग मेथड्स को इंट्रोड्यूस करना. Now when we say smart government schools, हमने स्मार्ट का डेफिनेशन किया है कि उसके अंदर एक स्मार्ट टीचिंग लर्निंग डिलीवरी सिस्टम होना चाहिए,
It could be a set of laptops, it could be a smart classroom, interactive touch screen, board, projector, all of that. Plus, it should also have a library, laboratory, drinking water, and a proper toilet facility. क्योंकि ये सारा definition हमने अपने लिए define किया है. So people may agree with this, people may think it's too little, people may think कि भाई smart का मतलब होता है classroom जो smart class infrastructure को accommodate कर सके. But our own understanding is कि कम से कम toilet, drinking water, laboratory, library, ये 4 चीजें definitely होनी चाहिए वहाँ पर. And that is the way we can call them smart schools. ये एक रीच लेवल गोल है. इसका हम लोग इम्पैक्ट लर्निंग लेवल तक मॉनिटर करने के लिए, बिकॉज दैट इज वी विल मॉनिटर टिल द लेवल ऑफ डज इट इंक्रीज इन अटेंडेंस. तो जैसा मैंने बोला, ये एक एक्सपेरिमेंटल गोल है. हम लोग देखना चाह रहे हैं इसका हम इम्पैक्ट क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ ये करने से शायद लर्निंग लेवल इम्प्रूवमेंट पूरा नहीं हो सकता. वो एक हमारा एजम्पशन है. सेकेंड सब गोल इज 70% children at class appropriate learning level in intervention schools, जो हम 20 लाख स्टूडेंट्स को हमारा टारगेट है कि हम रीच आउट करेंगे. इसके अंदर मल्टीपल मॉडल्स इन प्रैक्टिस है करेंटली. वन ऑफ द मॉडल इज वेयर वी आर वर्किंग विथ स्टेट गवर्नमेंट्स. तो 3 या 4 स्टेट्स में हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट्स डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के लेवल पे सेटअप किया है. नाउ these units basically provide मैनेजमेंट सपोर्ट टू द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, टाइमलाइन इंप्रूव करने के लिए, क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए, ट्रेनिंग ऑफ द एग्जिस्टिंग टीचिंग डिलीवरी सिस्टम, उसके अंदर डायट्स को कैसे स्ट्रेंथन करेंगे. तो ये सब चीज है, ये एक मॉडल है. दूसरा मॉडल है जहां पर हम टीचर को सेंटर मान करके टीचर्स के साथ में काम कर रहे हैं, एंड वी आर लुकिंग एट हाउ दैट इज इम्पैक्टिंग, क्योंकि टीचर और बच्चे का डायरेक्ट लिंकेज है. तो इफ टीचर इज इक्विप्ड प्रॉपरली तो उसका ट्रांसफर ऑफ लर्निंग शुड हैपन बेटर. तो ये एक assumption के साथ में वन ऑफ द मॉडल्स इज हैविंग टीचर एज सेंटर. वन ऑफ द मॉडल इज हैविंग साइंस, टेक्नोलॉजी, स्टेम बेसिकली एज सेंटर, जहां पर वी आर वर्किंग टू बेसिकली गेट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट delivered in local language in schools that already has smart infrastructure. Not necessarily हमारे द्वारा प्रोवाइड किया हो, बट गवर्नमेंट ने भी काफी जगह पे स्मार्ट क्लासरूम्स वगैरह बनाकर रखे हैं. तो वैसे स्कूल्स में हम लोग उनके साथ में काम कर रहे हैं. and of course there are direct outreach models are also, block resource centers, learning resource centers, उसको इंफ्रा अपग्रेड करके वहां पर बिल्कुल एंड टू एंड चीजों को मैनेज खुद से करना. So that literally works independently of the existing system, except that permissions and all things are granted. और इसके अंदर जो थर्ड क्वालिटी एजुकेशन का गोल है, which is again a reach level goal, where meritorious students who are in need of financial support, उनको हम लोग scholarships and fellowships provide करते हैं. Next, fourth goal is to increase land under irrigation and under vegetative cover. Targets are there for you to see on the screen. ये गोल हमारे फार्मर इनकम को ऑगमेंट करता है, बिकॉज फार्मर्स इनकम will definitely increase if the irrigation coverage is increasing. उनकी क्रॉपिंग इंटेंसिटी बढ़ सकती है. तो so therefore this goal is addressing that, but water harvesting is a very important goal for us. And similarly vegetative cover, so uncultivated land को vegetative cover के अंदर कैसे लाना है, like fodder crops or even proper agriculture और timber produce. तो वो सब चीजों को भी हम लोगों ने गोल का शेप में अपने लिए रखा है. फिफ्थ गोल हमारा है वो, that is on offsetting emissions, where we talk about 1,000 villages with clean and renewable energy solutions. तो यहाँ पर अगर आप देखें, टारगेट हमारा विलेज लेवल पे है, 1000 विलेजेस, एंड वी हैव डिफाइंड पैरामीटर्स की कम से पब्लिक लाइटिंग सिस्टम एक मिनिमम बेंचमार्क डिफाइंड है, इंडिविजुअल लाइटिंग, सोलर लाइटिंग फैसिलिटीज होना चाहिए, या बेटर कुक स्टोव्स होना चाहिए. तो ये सब चीजें हमने डिफाइन करके रखी हैं, एंड ओनली देन अ विलेज विल क्वालिफाई टू बी काउंटेड एज बीइंग रीच्ड आउट फॉर दिस गोल. इसका सेकंड सब गोल इज प्रीटी इजी टू अंडरस्टैंड. 2.5 मिलियन ट्रीज हमने प्लांट करने का टारगेट रखा हुआ है
particularly trees that can sequester emissions. नेक्स्ट गोल इज ऑन केमिकल फ्री फार्मिंग. तो हम 3 लाख एकड़ को फार्मिंग, केमिकल फ्री फार्मिंग के अंदर में लाना चाहते हैं. दिस गोल अगेन may indirectly contribute to increase in income of farmers in the long run. But overall, ये blatant use of pesticides and chemicals को हटाना बहुत जरूरी है. So we are basically having these projects implemented. It could be part of HRDP, it could be part of FDP projects also. FDP is focused development projects. And the last goal for us is sanitation facilities improve करना चाहते हैं हम लोग. So 1,000 villages to have waste management system, basically self-sustainable waste management system, composting, segregation, and then linking them with a proper recycler. And one unique goal is we are working with urban local bodies, municipal corporations के साथ में हम लोग काम कर रहे हैं, where we are setting up material recovery facilities. जो शहर का कचरा है वो मिक्स्ड शेप में नॉर्मली लैंडफिल साइट तक पहुंचता है. तो उसके बीच में व्हाट वी प्लान टू डू एंड वी आर डूइंग इज सेटिंग अप दीज मटेरियल रिकवरी फैसिलिटीज, जहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द प्लास्टिक वेस्ट. हम प्लास्टिक वेस्ट को रिकवर करके रिसाइकलर के पास में उसको बेचते हैं. नाउ इफ देयर इज एनफ वॉल्यूम, तो 2-3 शहर में एक्चुअली रिसाइकलर आकर के उसने हमारे मटेरियल रिकवरी फैसिलिटीज के साथ में अपना रिसाइकलिंग प्लांट लगा लिया टू रिड्यूस द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. एंड इट इज अ सेल्फ सस्टेनिंग मॉडल. इट इज मैनेज्ड बाय इन सम केसेस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज टेकन ओवर, जहां प्रोजेक्ट्स हमारी ऑलमोस्ट क्लोजर के लेवल पे आ गई है. एंड देन अर्बन लोकल बॉडीज हमें वो स्पेस वगैरह प्रोवाइड करती हैं. द ऑर्गेनाइजेशंस वर्किंग विथ अस, दे क्रिएट द एंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर managed by self-help groups that can be created and so on. And the last is sub goal under sanitation is now clean drinking water. So 1,000 villages to have access to clean drinking water. यहाँ पर हम लोग जल शक्ति मिशन के साथ में अलाइन होकर काम कर रहे हैं. बहुत सारे विलेजेस में हमने इंडिपेंडेंटली काम किया हुआ है. अगर उत्तर प्रदेश का एग्जांपल दिया था जेटली सर ने, तो उत्तर प्रदेश में वी वेरी रिसेंटली अबाउट 3 months बैक हैंडेड ओवर 30 विलेजेस, जहां पर ये पूरा का पूरा सिस्टम डेवलप किया है, वेयर वी आर प्रोवाइडिंग हाउस होल्ड लेवल वाटर सप्लाई स्कीम. वो हमने किया हुआ है. नेक्स्ट प्लीज. सो द फर्स्ट that this concludes the first part, where I have introduced to you what our approach is, what our goals are, where we want to reach by 2025. And let me tell you that we are pretty much in track in achieving our goals. बहुत सारे goals में हमने अपने टारगेट को ओवरशूट भी किया है, और 1-2 जगहों पर हमें थोड़ा सा काम करने की जरूरत है. पर्टिकुलरली केमिकल फ्री फार्मिंग के प्रमोशन को हम लोग इस साल थोड़ा और फोकस करेंगे. So I will take a pause and request for questions. Any questions on this, और कुछ भी अगर आप पूछना चाहते हैं. I cannot see the chat box, so if someone can, if there's any question there, someone can read it out. Thank you. My team will do that. Shabir ji, if you can. But it's very interesting presentation. बहुत अच्छा आपने बताया. और एक जो नई चीज समझने में आई कि मतलब योर प्रोग्राम्स हैव इनबिल्ट कंपोनेंट ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग इन इट, राइट? सो दैट इज वेरी गुड. सो आई विल नाउ रिक्वेस्ट हमारे साथी लोग कुछ सवाल पूछें. स्पेशली 2 तरह के साथी मेरे को देख रहा हूँ मैं यहाँ पे चैट बॉक्स में दिख रहे हैं. एक तो वो है जो ऑलरेडी दोज हु आर पार्टनर ऑफ HDFC, एंड देयर आर अदर्स हु आर नॉट पार्टनर्स ऑफ HDFC. तो आप जरा बताएं साथी, अपने सवाल पूछें, टिप्पणी करें, और let's see, let's learn from each other, please. The floor is open. एक हाथ उठा है मिस्टर अजहर अली. हेलो. हाँ, पूछिए सवाल मिस्टर अजहर आवाज आ? Yes sir जी, we can hear you. I can hear you. हाँ सर, गुड मॉर्निंग. मेरा सर सवाल ये है कि हम लोग अभी HDFC के पार्टनर तो है नहीं,
बट इन फ्यूचर अगर पार्टनरशिप के लिए बात करते हैं तो एज ए ग्रास रूट लेवल पे जो दिक्कतें आती हैं वो तमाम तरह के इश्यूज में आती हैं कि फाइनेंशियल स्टेटस हमारा बहुत लंबा नहीं है, हम इतने करोड़ के टर्नओवर वाले नहीं है। तो ऐसे परिवेश में हम लोग आपके साथ कैसे जुड़ करके एक बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं? जी, आप कौन सी संस्था से बात कर रहे हैं? जी बलिया से हूँ, बलिया उत्तर प्रदेश से। जी, हाँ ठीक है। तो एक ये जो पार्टनरशिप्स का है, मैं उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर देता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी प्रोजेक्ट का एक वैल्यू होता है और टाइमलाइन होता है 3 to 4 ईयर्स, मैक्सिमम 4 फाइनेंशियल ईयर्स तक हम लोग प्रोजेक्ट को सपोर्ट करते हैं। तो देयर आर सर्टेन क्वालिफाइंग क्राइटेरिया। कुछ क्वालिफाइंग क्राइटेरिया तो जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने डिफाइन की हुई हैं वो है, कुछ हमने इंटरनल बना करके रखा हुआ है। सो आर इंटरनल क्वालिफाइंग क्राइटेरिया के अंदर में जो हमारी ये है कि हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट साइज को उनके कैपेबिलिटी टू डिलीवर से जोड़कर देखते हैं। सो सपोज फॉर एन एग्जांपल, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन 4 से 5 करोड़ का टर्नओवर है उसका, तो वी नो दैट ये सेफली 5 के जगह पे 8 करोड़ तक, 9 करोड़ तक प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली वो फिर हमने वो थ्रेशोल्ड डिफाइन करके कैलकुलेशन के बेसिस पे देन वी सी कि ओवर अ पीरियड ऑफ 3 to 4 years what is the financing mechanism or financial support mechanism going to be। तो वो कुछ होता है, बट बहुत सारी आई कैन गेट व्हाट यू आर ट्राइंग टू टेल कि बहुत सारे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस देयरफॉर उस क्वालिफाइंग क्राइटेरिया में जुड़ नहीं पाते, क्योंकि हमारा कोई प्रोजेक्ट टिकट साइज जो एवरेज होता है वो करीब करीब 4 to 5 करोड़ ओवर अ पीरियड ऑफ 3 to 4 years होता है। कहीं ज्यादा होता है, कहीं थोड़ा कम होता है। तो इतना फाइनेंस एब्जॉर्ब करने की उसके बैलेंस शीट के इस पे नजर आना चाहिए। बेसिकली सर दिक्कत ये है कि जो ग्रास रूट लेवल के ऑर्गेनाइजेशन है ये सारे लीगल कंप्लायंसेस तो पूरे हैं, बट फाइनेंशियल मैटर में आके वो पीछे हो जाते हैं, जबकि फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी होनी चाहिए। जो संस्थाएं ग्रास रूट लेवल पे और बिल्कुल ही पिछड़े जिलों में काम करती हैं वो रीच नहीं कर पाती है आप तक जहाँ पे जरूरत है। नहीं, एज फार एज पिछड़े जिलों में रीच की बात है तो हम लोग प्रयास तो ये करते हैं जरूर कि सभी पिछड़े जिलों में हम लोग पहुंच पाए। ऑफ कोर्स सभी जगह नहीं पहुंच सकते, बट एजेंडा ऐसा है अपना कि वी विल रीच आउट टू द रिमोट प्लेसेस, रिमोटेस्ट कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री। मतलब नॉर्थ ईस्ट के वैसे वैसे कॉर्नर्स में हम लोग अभी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, विच आर लाइक गुवाहाटी से भी 14-15 घंटे लगते हैं पहुंचने में। In Uttarakhand, we are working in high altitude levels also. But I get your point. Unfortunately, वो एक limitation है हमारा as far as the financial thresholds are concerned. There is a limitation because as far as geographical outreach concerned, we want to reach out to those geographies. With what partners, वहाँ पर थोड़ा हो जाता है that partner should have that level of financial health of the organization. ये एक challenge है, but do reach out to us. We will see. We want to look at the experience and all of that. इसको मैं आपके दूसरे पॉइंट से जो हर्ष जी ने बात किया था कि how do we provide inputs in capacity building of the organization, ताकि वो उनका भी फाइनेंशियल हेल्थ थोड़ा सा इम्प्रूव करे, या छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स करके अगर हम लोग कुछ डिमॉन्स्ट्रेट कर सके तो हाउ डू वी टेक इट। सो वो हम लोग अभी इंटरनली उस पर चर्चा कर रहे हैं, एंड वी विल डेफिनेटली, बट डू कीप इन टच, एंड इफ देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ कोलैबोरेटिंग इन फ्यूचर वी वुड डेफिनेटली लव टू वर्क। सर दूसरा क्वेश्चन था कि कैसे आपके साथ हम लोग आपको टच कर सकते हैं, कोई इंफॉर्मेशन मेल आईडी वगैरह अवेलेबल हो तो। वो हम आपको फॉरवर्ड कर देंगे, ईमेल आईडी वगैरह। थैंक यू अजहर जी। नेक्स्ट टाइम मिस्टर शौकत, जम्मू एंड कश्मीर से। शौकत जी आप पूछें सवाल। हेलो एवरीवन। हाय शौकत जी। हेलो, am I audible? Am I audible? Yes, you are. You are.
हेलो रितेश सर, हेलो हर्ष जी, दिस इज शौकत फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टीम ट्रस्ट। मुझे लगता है मेरा जो सवाल था उसका जवाब अभी मुझे मिल गया। तो लेकिन हाँ, मैं चाहता हूँ कि जो ये प्रेजेंटेशन है ये लास्ट में सबके साथ शेयर हो, और जो आपका सर ईमेल आईडी है वो अगर मिल जाए तो वी कैन गेट, सो दैट वी कैन गेट इन टच विद यू आफ्टर दिस मीटिंग इज ओवर। जी, वो हम आपको फॉरवर्ड कर देंगे, ईमेल आईडी भी दे देंगे। ओके, थैंक यू। हाँ जी जी, थैंक यू। वेलकम। नेक्स्ट मिस्टर सिल्वेस्टर इज। हाय एवरीवन, दिस इज सिल्वेस्टर और मैं इंडिया वर्किंग ग्रुप फॉर हेल्थ एडवोकेसी से आई रिप्रेजेंट दैट ग्रुप, और हम HIV, TB और मलेरिया के लिए बेसिकली एडवोकेसी रिलेटेड काम होता है। मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चन ये है कि क्या HDFC परिवर्तन जो है वो स्पेसिफिकली क्या LGBTQI कम्युनिटीज और स्पेसिफिकली ट्रांसजेंडर कम्युनिटीज उनके लिए कुछ इनिशिएटिव्स है, work with them, or are they even in your agenda? Yeah, thank you. Yeah, thank you for asking that question, Sylvester ji. So there are two aspects to this. One is on hiring of different social groups and sectors. So that is a very pure business kind of a thing. वहाँ पर हम लोग वो hiring वाले इस पे भी देख रहे हैं. But apart from that, we don't have any active project. कुछ projects में they are not part of a special group. वो पूरे group में I know that we have people who are undergoing training, let's say. तो वो training group के part हैं. So they are not excluded, but we currently do not have a exclusive project focusing on LGBTQI community. We have projects for differently abled people, PWDs के लिए हमारे projects particularly skill training and placement and employment opportunity training कर रहे हैं उनके साथ में. But we are very much open to have an exclusive project also for LGBTQI. Yeah, so that's what. Do you plan to do it in the near future? Was also the second question. Yeah, so we have a rolling basis of taking up projects. For this year, we are largely committed, but we are open to be reached out throughout the year. I will request my colleague to put in the mail ID, which is common to the bank. Structure, मैं थोड़ा सा अगर if I take 30 seconds to tell the structure. So we are divided nationally. We have 6 regions, and 6 regions में projects. We have regional managers who manage the projects, and then they have program managers who are assigned certain geographies or projects. So projects onboarding, project ka discussions are all taken up at the regional level, and then it is kind of through a filter it comes to me for approval. Feel free to write to that common ID, which my colleague will put it in the chat box. Yeah, it's csr@hdfcbank.com, and you can mark it refer to Ritesh Sinha. So you will get a response, and someone will look at it. Thank you so much. Much appreciated. Thank you. So can I move ahead now, or are there more hands? Yeah, there are more hands. Prasunji from. Okay. Prasunji, our next time is Mr. Ashok Kumar. Yeah, thank you so much, ma'am. Good afternoon, Ritesh sir. My name is Prasoon Matpal, and I work with Seco-Edicon, an NGO in Rajasthan. So, sir, as I can see on my screen, goal 4 of HDFC Bank's Parivartan Vision to increase the land under irrigation. So, our organization also works for natural resource management and has built a lot of anicuts for the people and to solve the problem of water in Rajasthan. So, sir, I would want to ask you, what is the priority of HDFC Bank when it comes to Rajasthan and the process of collaboration with HDFC? Thank you so much. So you first of all, you write to CSR at HDFC Bank. We have a very significant presence in Rajasthan. We have, I think we have at least 6 different organizations with whom we are working.
at least in half the number of districts that Rajasthan has. I think there are 24 districts in Rajasthan, if I'm not wrong. So we are present in 12 to 13 districts. So feel free to reach out to us. If there is a good project, we would definitely like to discuss this further. And we will put you in touch with our regional manager for further conversations. And this is a generic response to everybody who is looking for things. If you have an aligned project that addresses our goals, more importantly on irrigation, on emissions, or on chemical-free farming, because the rest of the goals, I think we are pretty much on track. These are the 3 goals where we would be having our focused concentration in the coming year or so. तो इस एरियाज में अगर जो इंटरेस्टेड हैं काम करने के लिए वो हमें जरूर लिखकर दें. देयर आर ऑफ कोर्स क्वालिफाइंग क्राइटेरिया, एनजीओ इम्पैनलमेंट प्रोसेस है हमारा, तो वी विल रिस्पॉन्ड टू यू नो ऑन अ केस टू केस बेसिस on how we basically onboard partners. But it won't be possible for me to cover that, because that in itself is a 15-20 minute exercise where I talk about I have already spoken to Azadi about you know, the financial thresholds that we look at in terms of experience of implementing and managing certain volume of funds. Apart from that, there are a lot of other things that we look at while onboarding. You know, so feel free to reach out. Sure. Thank you so much, sir. We'll be writing on CSR at HDFC Bank and get back. Sure. Ritesh ji, you want to continue taking questions, or you want to continue? I would recommend that let's continue. There are questions. You know, you can send it to me later on, and I can respond to you over email later. At the end of the presentation, also you can take. We can take a few questions. Yes. Yes. Please, now you can continue with your. So, Janvi, let's move to the next slide. Yes. So, this is something that I have not created. We are looking at, since we talked about crisis. So there are 3 aspects: crisis, disaster, emergency, problem. So crisis is a situation where you don't have a evidence-based solution to anything that we have done. The recent one is COVID. Nobody had any clue what to do. So we don't have a solution, and it, of course, you know, has a lot of attention. It can be local, it can be global, you know, so that level of crisis can be there. And a crisis can then evolve into disaster. It cannot, some of these could not be controlled, you know, but there are certain things under disaster, you know, let's say predictability. I think that I will cover in the next slide. And there is a timeline attached to it. How much time do you take to respond? You know, and that is where the role of CSR comes in. Can we move to next slide? So I just wanted to highlight on predictability and action standpoint. Like COVID-19 crisis, it became a global disaster. Unpredictable, but now it is partially predictable also. Because for the last 2.5 years, there has been evidence based on you know, the crests and troughs of the graph. So we know that it will increase here, then it will move to some other country, and overall it will, you know, continue to have that wave. So उस wave की थोड़ी predictability अभी possible है. So we know कि South Africa में बढ़ रहा था, तो we started to prepare as a country that it may come in India also. Let's say the Omicron wave. Second is the climate change crisis. Everyone is talking about it, but there is again a predictability around it. So when there is a predictability, there is a structured response possible, right? But emergency, like, you know, where we need to have an immediate action, a response. Drought, flood, famines, again, both long-term and short-term actions are required. There is certain degree of predictability also. Monsoon के time पे UP, Gangetic Plains में थोड़ी flooding की issue होगा. So all of that you can predict, and therefore a response can be structured around it, right? Malnutrition, infant mortality, I say it's a
crisis, again, long-term planned action, maybe 5 years, 10 years kind of a roadmap is required. Global goals like net zero, sustainable development goals, again, long-term and short-term actions are required. So these are some of the, very local to global level challenges which impact all of us. And therefore, how do we respond to this I'll present it into the next slide. So collaboration potential are in 4 different areas: rescue, relief, rehab, and resettlement. Now, rescue, and I'll also relate this with HDFC Bank's approach here as far as CSR is concerned in coming slides. Rescue, we may not have these skills. Some organizations may have these skills. People who are trained in rescue and relief work, the initial first responders. They say in our country, typically it's the special forces. Sometimes it could be trained individuals, and it is taken in a mission mode. There is a very critical requirement against the timelines, against the ability to reach to an area. And if you recollect, I said in the initial opening remark that what we cannot do is very important for us to understand, so that we do not end up spoiling someone else's good work. You might have heard of examples where loads and loads of materials were unattended, food items got stale because it was not well coordinated. So what happens is, and maybe a set of volunteers go, but the volunteers are not trained to handle a particular situation, and one could end up actually spoiling it further. Simple example is, let's say there is a road accident victim. Now, if someone is not really trained to handle a victim, how to lift the victim, how to hold it up, how to put the victim in the ambulance, then in spite of the best of intent, वो हो सकता है कि काउंटर प्रोडक्टिव हो जाए. तो वो एक अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, what we cannot do. उसके अंदर में whatever you are sure that you can do, one can always look at doing that. Then from rescue, when it moves to relief, is where I see a lot of role for CSRs, collaboration with CSOs, where resources for survival, initial resources for survival, post-rescue resources for survival is required. And then उसके फिर next phase में rehab and resettlement में we look at a medium to long term kind of an engagement, reconstruction, livelihoods, education, promotion. So these are things that I think we as CSR should be looking at. Between relief, resettlement, and rehabilitation is where our role largely lies. So short term to long term, our presence is should be feasible, and action can be taken. Next. Some of the other things is looking at predictive analysis, preemptive measures. As I said, drought, floods, wherever one can predict based on seasonality. So based on predictive analysis, how can you do a proactive project, create that kind of infrastructure and the entire support system and mechanism, and also building technology to provide that solution. Scalable models for disaster mitigation, resettlement, and rehab. So whatever you are doing, can it be scaled up in a particular disaster? Can there be a standard procedure, at least some pointers, some guidance, being made available for others also to, look at that. तो वो भी possible है. Like example मैं अगर देना चाहता हूँ आपको, तो हम एक project कर्नाटका में करते हैं, जहाँ पर हम लोग farm ponds promote कर रहे हैं. It's a very easy project to do, but उसको हम बहुत बड़े scale पे कर रहे हैं. तो वो farm ponds से water का issue, water की crisis को resolve कर रहे हैं. Because there is a predictive analysis available and we have technology जो farm pond कहाँ पे बनना चाहिए, geosensing and all that things are being made available. तो ultimate result उसका क्या हो रहा है? We are moving from single crop to 2 crops quickly. That is possible. तो ये सब चीजें हैं जो scalable models हमने किसी और के model से understand करके we have chosen to support that particular model. Other areas could be research and development, infra creation, cadre, developing a cadre for response and resource support.
but it varies from organization to organization. Like जैसे आप देखो अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज रहेंगी, so some of them are trained in disaster response because they are managing a manufacturing unit. वहां पर there are potential safety issues, तो उसके लिए लोगों को उस तरीके की ट्रेनिंग मिलती है, but it may not be universally applicable to all the organizations. So depending on what sector an organization is working, they can be prepared to do the response. And therefore, the last point, and which is to me is a very important point, is strategy for long-term goals. You know, potential disasters which could be largely predicted through your analysis, उसको हम लोग किस तरीके से address कर सकते हैं, like climate change and sustainable development and so on. Next. So the previous 2 to 3 slides were my thoughts on how do I see and how does banks response to a crisis situation is viewed as. Now I'm moving to giving an example on how did we react to the COVID-19 pandemic when it started, right? And so one can qualify, what was relief, what was resettlement, what is rehabilitation. Some of this is still ongoing, right? So where did we start? First, if you go back to early 2020, there was a lockdown. People started to go back to their villages. There were a lot of media coverage around it. So what we did is we started to look at monthly ration support. Nobody knew how long this lockdown will be there for, how long this entire crisis is likely to last. So we started to look at a month-to-month kind of an approach. So ration support and it was all well coordinated and possible only because we had a strong NGO partnership. So I would use this forum also to complement the network of NGOs who were there on ground and providing the right feedback to everybody, not only us, but also to some of them were providing feedback to the government system as well. What is the situation on ground? So some of them definitely helped us in reaching out to our HRDP network of villages. We started with monthly ration support and 1.41 lakh households across 16 states were provided. So a month of ration support was provided, and in some cases, it was also extended to up to 3 months of ration support. While doing that, around the summers of 2020, we started to create local jobs for people who have returned in particularly the natural resource management activities that are any which ways planned as part of our project. So we said that let us start taking it up, wherever we get permissions to do that. And so that we engage people who have particularly migrated back into their villages and they don't have any source of income generation, so that they get at least some employment locally and they get some survival, finance, survival money available to them. So that was, I would say, kind of a relief work that we started with. And then we move into infra creation. So we started to look at which hospitals, some big hospitals we started for ICU upgradation, particularly the bigger ones where there were a lot of hospitalizations for COVID cases. And then we moved into a project which is still under implementation, is a 10-bed ICU with a civil society organization. The idea is to create 10-bed ICUs in each district of the country, is what the agenda of the CSO is. We have partnered with them for 30 districts in the country. So these are standard 10-bed ICU structures created in civil hospitals or district hospitals. In some cases, it is the CHCs also. Then we launched a special scholarship for COVID-19 affected students. We knew that they're not going to schools, they're not going to colleges, but what they need is continuation of their education. So there was some financial assistance, and this one point I think I missed out also highlighting earlier. Our scholarship is not essentially a fees reimbursement model. Our scholarship
is making funds available to facilitate education. So a student can buy a laptop, for example, or can buy a bicycle, that assists the student to continue their education. So accordingly, this scholarship was also extended to the families. We also started a Corona counseling helpline with one of the foundations, Cohesion Foundation in Maharashtra, because we got a request from the district administration of potential, suicide cases and so on. So we started to look at, counseling helpline at that point in time, and also providing support for coordination for delivery for people who were quarantined, right? And this was made possible through the intervention of TISS. Similarly, ambulance services, hygiene kits, oxygen plants in various geographies is what. So typically these are our response to the COVID crisis. And then the second last point I would like to draw your attention is skill development of medical professionals, nursing training. We undertook ICU intensivist course curriculum for youths. Then also trained medical professionals in handling COVID cases and creating a cadre of medical professionals, support staff, but who are undergoing a long-term training. So these are 1,000-hour classroom trainings that we are currently undertaking. And we are seeing some good result and making that cadre of. So there are two approaches. One, manpower inflow into the system, as well as upgradation of infrastructure, particularly in a deprived geography or a geography where the access to a good medical facility is limited. So all of these are structured response. These are, this continued till very recently. Next. Apart from this, there are other disaster and crisis situations. So we have responded to some of these cyclones and storms, Amphan and all, those. So we have gone back to create the infrastructure, completely reconstruct schools, but other issues which are on the long-term nature, like solid waste management. Now, plastic pollution is a huge crisis or a crisis in the making. So there are projects on recycling of plastic, recovery of the plastics from the waste value chain is something we are looking at. Then in flood, drought affected areas, survival kits, medical support, and then moving to rehab, infra creation, and so on. So these are some of the things that we take part in or we support. We have supported in the past, and we will definitely continue to support. All of you may be knowing that HDFC Bank has declared to become a carbon neutral organization by 2032 through our ESG projects. So ESG projects is basically, these are not CSR projects, but projects undertaken internally to be consciously improving our footprints and identifying areas of improvement internally. So that is also kind of a response to an emerging crisis or crisis that has already emerged. Next. Yeah, so these are some of the glimpses of the trainings that we conducted, some of the infrastructure that has been created. Continue. Next. Right, so disaster response, if you could see, there's high-raised platforms, high-raised toilet infrastructure, high-raised shelters in Assam is what we have done. Cleanup treks and so on. Next. Yeah, so that is all from my side. Thank you very much. If there are more questions, I think we can spare about 10 minutes or so. Yes, you can. There were two people who were in queue for asking question. One, may I request Ashok Singh ji
to ask the question now. Sorry about that, we could not take the question earlier. And there is another person, Mr. Arun Kumar from Agakam Foundation. 2 people are in queue. Hello, can you hear me? Yes, yes. Yes. Hi, Ritesh. Good morning. So, Ritesh, as you discussed earlier regarding the green enterprise and green jobs in previous slide, so since we are working in, we are recently start working in this sector, like promoting the SSGs and to forming vermicompost and others methods for agriculture. So what kinds of other opportunity we can figure out? It would be great if you discuss more about, elaborate more about green enterprise and green jobs. Okay. So green jobs, I would say there are two aspects to it. One is what you are currently doing is creating enterprises around vermicomposting and all, basically helping the agri sector. But the energy sector and the transportation sector, for example, let's say repairing of electric vehicles, that is one emerging sector where we will need technicians in future. Yeah. So that is one area. Repairing of solar panels, a lot of people have started to do that. But we are also looking at supporting, those are 3 to 6 months kind of skills that will be imparted, and that will create green jobs or create a cadre of people who are available for the green jobs that are likely to come. As per our and also like since we have a project in Patna, also like waste management thing, that's also comes in green enterprises. Yes, it can be considered as a green enterprise. Okay. Any other example, like other partners doing like different kinds of work in green sector? So that would be helpful if any document or any our partners working in different geography for reading purpose, that would be helpful for us, for me especially, if someone is doing. Sure. So whatever is there in public domain, I would definitely share those with you. We are doing projects under circular economy system, and that is pretty challenging but very exciting also. So we have some very good examples emerging out in that sector in Bihar, in Jharkhand, in other locations, MP, virtually about 10 to 15 locations across the country. We have some good examples coming up. But as I said, So love to hear you. Sure. We are already working with AKF since a long time. And thanks to you and the entire AKF team for our collaboration, particularly in UP. Thank you. Next, Mr. Arun Kumar लेंगे क्या? मैं Ritesh ji, this is Ashok Singh from Sahbagi Shikshan Kendra, Lucknow. जी sir. We are partner of HDFC program right from beginning in UP. मुझे रितेश जी जो पूरा प्रेजेंटेशन था बहुत अच्छा लगा, बहुत क्लैरिटी थी उसमें, और स्पेशली द गोल, सब गोल, टारगेट्स very clearly mentioned. मुझे कोई प्रश्न नहीं है, मुझे एक कमेंट है रिगार्डिंग HDFC प्रोग्राम ऑन 74th amendment related to the cities and towns. मुझे लगता है कि अभी भी जो कहीं ना कहीं पर पूरा फोकस जो है वो तीनों तरह के टाउन है, लार्ज, मीडियम एंड स्मॉल ऑल्सो. देयर आर मेनी इम्पोर्टेंट स्मॉल टाउन्स, और वहाँ की अभी भी जो होल गवर्नेंस सिस्टम है 74th अमेंडमेंट के अंतर्गत में, वो बहुत स्ट्रेंथन नहीं हुआ है. तो मुझे लगता है कि वहाँ पर कहीं ना कहीं पर रिफॉर्मिंग अर्बन गवर्नेंस जैसे मुद्दे भी, पूरी प्लानिंग के प्रोसेस एंड हाउ पीपल आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द एंटायर ओवरऑल प्लानिंग प्रोसेस, जो वहाँ के रिसोर्सेस हैं गवर्नेंस के जो है, वो अभी भी बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर्ड नहीं है, उनकी क्लैरिटी नहीं है काम में. और समहाउ
मुझे लगता है कि वहां पर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप देखेंगे बड़े शहरों में कहीं ना कहीं पर थोड़ी फोकस है, थोड़ा सा वो इशू बनता है, पर इन छोटे शहरों में इशू भी नहीं बनता। हम लोगों ने सीतापुर के खैराबाद को एक लिया था, बहुत पुरानी म्यूनिसपैलिटी है, तो वहाँ की जो नालियां हैं, पता नहीं कम से कम 50 वर्षों से साफ नहीं हुई, गंदी बज बजाती नालियां, और अनस्ट्रक्चर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग, जो पूरे जो टाउन का सेटलमेंट है। तो मुझे लगता है कि वहां पर रिफॉर्मिंग गवर्नेंस जैसे इश्यूज पर और थोड़ा सा ये करें। जो लोग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उनको बहुत सारा आइडिया नहीं है, तो दिस इज अ वेलकम स्ट्रेटेजी ऑफ एचडीएफसी बैंक सीएसआर। मुझे लगता है कि सीएसआर को भी, क्योंकि बहुत सारे सीएसआर मैंने देखा अभी भी बहुत ज्यादा अर्बन 74th अमेंडमेंट को लेकर बहुत ज्यादा नहीं, 73rd पंचायत पीआरआई इन्वॉल्वमेंट पर काफी काम हुआ है। तो दिस इज अ वेलकम दिस थिंग इनिशिएटिव ऑफ एचडीएफसी बैंक सीएसआर, और मुझे लगता है कि ये एक निश्चित रूप से बहुत अच्छा। पर इसमें भी जो पूरा फोकस जो है कहीं ना कहीं डिलीवरी सिस्टम को लेकर है कि कूड़े का प्रबंधन और ये, बट हाउ टू इंश्योर पीपल्स पार्टिसिपेशन इन एंड स्ट्रेंथनिंग द गवर्नेंस सिस्टम व्हिच इज ऑलरेडी देयर। एक तो ये कमेंट था सर मेरा, और दूसरा एक कमेंट है, मैं थोड़ा चिंतित भी हूँ। मैं चूंकि एक पूरे उत्तर प्रदेश में एक बहुत एक नेटवर्क है, उत्तर प्रदेश वॉलंटियर एक्शन नेटवर्क, मैं उसका सदस्य भी हूँ, और मुझे लगता है कि सीएसआर के आने से एक चीज में जो कमी मुझे ओवरऑल दिखाई दे रही है वो है कि स्वैच्छिक संस्थाओं के की कैपेसिटी बिल्डिंग का, उनको और इनेबल बनाने का, उनके बहुत सारे जो कमियां हैं, उनकी डॉक्यूमेंटेशन का, उनका इंटरनल इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग का, उनकी अकाउंटिंग सिस्टम का, उस पर बहुत जोर नहीं हो रहा है। लोग ढूंढ रहे हैं जो स्ट्रेंथन एंड कैपेबल ऑर्गेनाइजेशन हु कैन डिलीवर द गुड्स, है ना। तो उसमें सिर्फ बड़ी बड़ी संस्थाएं जो है वही उस काम कर पा रही है, पर छोटी छोटी संस्थाओं का विकास बंद हो गया है, और ये पूरा सेक्टर इससे प्रभावित हो रहा है। मुझे लगता है कि और उसका रिस्पांस में सीएसआर क्या करे कि कई बार बड़ी संस्थाओं को बाहर से बुलाया जाता है, भाई आप करो। बहुत सारे मैं देखा हूँ कि बहुत सारे ऑलरेडी जो सीएसआर हैं वो अब ऑर्गेनाइजेशन बन के बहुत सारे काम कर रहे हैं, और उनको भी कई बड़े सीएसआर जो है उनको फंड कर रहे हैं। तो ये धीरे धीरे वहाँ की स्थानीय स्वैच्छिक संगठनों को की स्थिति जो है उससे कमजोर होता जा रहा है। तो जो लोकल पीपल्स मूवमेंट जो खड़े हो रहे हैं, जो जो वहाँ लंबे समय तक रहेंगे, क्योंकि बाहर से किसी को बुलाकर और थोड़े दिन काम कराने से वो, मुझे लगता है कि वो लॉन्ग टर्म, तो इस सेक्टर को स्ट्रेंथनिंग करने का काम कैसे होना चाहिए, इस पर भी थोड़ा सा विचार करने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि ये हम लोग की बहुत आशा थी कि इस तरह के सीएसआर में थोड़ी स्पेंडिंग होगी, उस पर थोड़ा काम होगा, उस पर थोड़ा सा बातचीत होगी, वो मुझे कहीं ना कहीं पर एरिया ऑफ कंसर्न दिखाई देता है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, वेरी वैलिड कमेंट्स, एंड थैंक यू फॉर कॉम्प्लीमेंटिंग। हम लोग छोटे शहरों में भी काफी काम करने का कोशिश कर रहे हैं, एंड अगले 4-5 सालों में स्टैटिस्टिक्स ये दर्शाता है कि शायद हमारे अर्बन पॉपुलेशन विल बी मोर देन रूरल पॉपुलेशन। आई डोंट हैव एग्जैक्ट स्टैटिस्टिक्स एज ऑन डेट, बट अर्बन एरियाज में जो लिविंग लाइफस्टाइल रिलेटेड चैलेंजेस हैं, पर्टिकुलरली जो लोग आके स्लम्स में बस जा रहे हैं, आइडेंटिटी क्राइसिस फेस कर रहे हैं, लोग बाहर से आ रहे हैं, लोकल डोमिसाइल नहीं है, तो बहुत सारी चैलेंजेस इन सब चीजों को भी लेकर आ रही हैं। वी आर अवेयर अबाउट दोज सोशल इश्यूज ऑल्सो। उसको कैसे एड्रेस करेंगे फ्यूचर में, वो भी देखने की जरूरत है। दूसरा पॉइंट जो आपने भी उठाया और पहले अजहर जी ने भी उठाया था, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एक्चुअली। हम लोग भी इंटरनली ये सोच रहे थे, एंड वी आर स्टिल थिंकिंग अबाउट इट, सो just sharing it within the forum that हमारे लिए भी it's a big challenge to get good organizations to work. Honestly admitting, हम लोग करीब, जैसा मैंने बोला, करीब 115 से 120 NGOs के साथ में काम करते हैं हम लोग. They act as our implementing partners. Ultimately they are there on the field. बहुत सारी हमारी expectations होती है, expectations related to documentation. आपको फोटोग्राफी भी स्किल अच्छी आनी चाहिए, प्रॉपर रिपोर्ट्स आना चाहिए, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन हो रहा है हमारे पूरे सिस्टम में, लार्जली सारे जगहों पे धीरे धीरे अभी हो रहा है और शायद और इम्प्रूव होगा. मे बी नेक्स्ट 2 to 3 years में 100% टेक्नोलॉजी बेस्ड प्लेटफॉर्म पे ही रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम्स चले जाएंगे. ओवरऑल मैं अगर कंट्री की बात करूँ तो
ये सब स्किल बेस अगर हमारे वॉलंटरी सेक्टर में नहीं आएगा तो वो फिर इश्यूज होंगी. तो वी ट्राई टू सपोर्ट टू सम एक्सटेंट विद इन आवर एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स कि हम स्टाफ की कैपेसिटी बिल्डिंग में किस तरीके से सपोर्ट कर सकें. अपार्ट फ्रॉम स्पेसिफिक स्किल नॉलेज, थोड़ा सा मैनेजमेंट का नॉलेज हो, थोड़ा ऑटोमेशन से रिलेटेड कुछ अंडरस्टैंडिंग बने, तो इन सब चीजों पर भी ध्यान है. दूसरा जो मेजर पॉइंट आपने ये कहा कि वॉलंटरी सेक्टर को एनरिच उस लेवल तक करके आना है जहां पर दे आर एबल टू इम्प्लीमेंट योर प्रोजेक्ट. अगर चैलेंज अपने आप का गवर्नेंस में ही ज्यादा टाइम चला जाएगा तो इम्प्लीमेंटेशन ठीक से नहीं हो पाएगा, वो कॉम्प्रोमाइज होगा. सो एंड आई एग्री विथ यू अशोक सर कि वो गवर्नेंस वगैरह स्टेबल हम लोग देखते हैं, उसके बेसिकली जितना रिस्क कम हो सके उसको एनालिसिस करने के बेसिस पे वी पार्टनर. बट वी आर कॉन्शियस ऑफ दिस रिक्वायरमेंट बिकॉज एज आई सेड वी आल्सो फेस अ चैलेंज इन ऑनबोर्डिंग न्यू पार्टनर्स. हमें पार्टनर्स भी नहीं मिलते. वी गेट अ लॉट ऑफ रिक्वेस्ट्स. मेरे मेल बॉक्स पे रोज 3 से 4 रिक्वेस्ट ऐसा आता है. हमें आगे काम करने के लिए लोग चाहिए, पार्टनर्स चाहिए, और एक सर्टेन कैपेसिटी, एक सर्टेन लेवल पे, एक सर्टेन थ्रेशोल्ड ऑफ देयर फाइनेंशियल कैपेबिलिटी, देयर मैनेजमेंट कैपेबिलिटी, देयर गवर्नेंस कैपेबिलिटी, इन सब चीजों को क्वालिफाई करते हुए चाहिए. तो वहां पर वी फेस चैलेंज इन गेटिंग दैट राइट ऑर्गेनाइजेशन. सो we this is very much in our consciousness. We are working on a strategy. As I said, these goals are applicable till 2025. तो आने वाले 2 सालों के अंदर में we should be ready with our future action plan for maybe 5 to 10 years. उसके अंदर हम लोग इन सब चीजों को कैसे बिल्ड इन कर सकें, स्मॉल ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशंस को कैपेसिटेट कैसे कर सकें, उनके लीडरशिप को कैसे कैपेसिटेट कर सकें, एंड देन यूज देम, maybe looking at small pilot projects also, right? तो वैसे भी कुछ सिस्टम्स के अंदर हम लोग प्रयास कर रहे हैं काम करने का. As I said, this is still things that are under discussion, so there is no kind of commitment right now, or this is not to be taken as a public declaration. But सेक्टर के चैलेंजेस हमें भी पता है, और वो चैलेंजेस हमारे लिए भी इंटरनल challenges हैं. सेम सेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस या हैंडफुल ऑफ 10 से 15 ऑर्गेनाइजेशंस में हम भी अपना CSR इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, अदरवाइज वो बहुत स्टेरियोटाइप इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा. हमारे लिए तो सारा लर्निंग ग्राउंड, सारी जो इंफॉर्मेशन दैट कम्स फ्रॉम दी पार्टनर्स, वो हमारे लिए लर्निंग और हमारी एनरिचमेंट उससे होती है, एंड दैट शुड रिफ्लेक्ट इन आवर प्लानिंग फॉर फ्यूचर. बट योर पॉइंट इज वेरी वेल टेकन सर, एंड आई होप I'll be able to do something about it in future. Thank you. So Shabin ji, over to you. Hello. Sir. 5 more hands are up. Should we continue or हर्ष जी वाइंड अप कर देंगे? नहीं, हर्ष जी वाइंड अप नहीं करेंगे. हर्ष जी ने भी एक सवाल पूछना था. हाँ, सवाल पूछ के नहीं, सब आप सबसे ब्रीफली ले सकते हैं प्रश्न, जो 4-5 हाथ हैं. तो मैं ब्रीफली ये जानना चाहता था रितेश जी से, जो मेरा प्रश्न है वो अशोक भाई ने जो प्रश्न पूछा उससे मिलता जुलता है. 2 चीजें उसमें क्या है कि जब से CSR का सिस्टम शुरू हुआ, एक्चुअली हमने देखा है कि अच्छा काम हो रहा है, लेकिन जो इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग का जो कॉन्सेप्ट हुआ करता था बहुत पहले, जैसे आप देखिए रतन टाटा जो JRD टाटा जो थे, JRD टाटा ने बड़े अच्छे इंस्टीट्यूशंस क्रिएट किए थे टू वर्क ऑन सोशल सेक्टर. वो सब बंद हो चुके हैं पिछले, जब से नई वेव आई और अब नया मॉडल भी आ गया है. कोई इंस्टीट्यूशन बन नहीं रहे हैं जो कि कल को हम कह सकें कि एक लिगेसी कोई संस्था छोड़ के जाती है या कोई विचारक छोड़ के जाता है, वो है नहीं. जैसे आप रितेश जी जैसे XISS के पढ़े लोग हैं, इन लोगों को पता है कहाँ से कैसे ये इंस्टीट्यूशन खड़े हुए थे हमारे देश में, लेकिन उसके बाद से कोई इस तरह का इंस्टीट्यूशन बना नहीं है. तो उसके बारे में क्या सोचती है CSR? और मेरा दूसरा प्रश्न ये था कि रितेश जी आप बता रहे हैं करीब 150 प्रोजेक्ट्स आपके पूरे देश में चल रहे हैं. मैं आपकी बातचीत सुन रहा था तब से, और जिस तरीके से आपने बताया कि इतने अच्छे तरीके से काम हो रहा है, बट वेयर इज दैट बॉडी ऑफ नॉलेज? बिकॉज आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद सब खो जाएगा समय के साथ साथ.
So would you like to see कि जो हमने अभी मैंने शुरू में एक बात कही थी कि to develop a repository of the knowledge in this sector, जो कि आने वाली जनरेशन उसको यूज कर सके, पता रहे कि हाँ एक डॉक्यूमेंट हो, एक जगह हो कि लोग उसको कर सकें कि इस तरीके से काम हुआ था, ये हमारे लेसन थे। तो एक चीज में, और वो भी उस भाषा में जो भाषा हमारे सेक्टर के बाहर के लोग समझ सकें, ये मैं जानना चाहता था। 2 प्रश्न थे। तो अब शबीन जी, मैं ये कहूँगा ऐसे छोटे जो साथियों ने हाथ खड़े किए हैं वो अपने विचार संक्षेप में रख दें और रितेश जी बताएं था, उसके बाद हम लोग ठीक कर सकते हैं। थैंक यू जी। तो नेक्स्ट सिल्वेस्टर जी आप पूछ लीजिए। थैंक यू शबीन जी। जी रितेश जी, जल्दी जल्दी यही एक प्रश्न है कि आपके हेल्थ और हाइजीन कंपोनेंट में क्या HIV और मलेरिया को प्राथमिकता दी गई है? हाउ डज दैट गो? थैंक यू। गीता जी, गीता जी आप पूछ लीजिए, फिर सब क्वेश्चंस लेके एक साथ जाओ। जी नमस्ते रितेश जी। नमस्ते। तो CSRs के आने से कंपनी एक्ट 2013 के बाद से काफी स्ट्रक्चर आया है CSOs के काम में, एंड particularly I would like to compliment HDFC CSR because the kind of clarity, the support, guidance throughout we get is that is beautiful. And now I have 2 questions. The first question is, it is a very welcoming move that disaster-led projects, disaster situation को भी CSR work के ambit में HDFC ला रहा है. So HSK has been a state-level resource in UP for flood relief since last 10 years. So in case if we want to apply for such kind of projects, then what will be the process? I mean, how to approach for that? That is my first question. And the second question is a personal question. Sir, I am also a student of XISS. And during my college days, our professors used to say that start your journey with an NGO so that if you want to learn. But unfortunately, अभी जैसे भाई जी ने कहा है, हर्ष जी ने कहा है, NGOs में सीखने के लिए हमारे पास प्रोजेक्ट्स ही नहीं रहते हैं, and eventually there might be a situation in coming 5, 10 years that the entire knowledge would be lost. And that is a real concern for people who have begun just, in last 5 years. So I would like your input on this thing, sir. Thank you. Is that all? Okay. हेलो, अजहर अली जी को पूछना है, शायद हाथ ऊपर है। थैंक यू मैम। सर, आपका जो प्रेजेंटेशन था डिजास्टर से रिलेटेड बहुत ही अच्छा था, और मैं डिजास्टर प्रोन एरिया में ही हूँ जहाँ फ्लड हर साल आना है और तमाम तरह के इशू खड़े होते हैं उस रिहेबिलिटेशन और लैंड्स को लेकर के। तो सर मेरा ये था कि क्या नाम है, एक तो चेकलिस्ट सर आपका HDFC का सबको अवेलेबल होने चाहिए कि हम किस आधार पे अपने आप को आपके सामने प्रस्तुत करें। हम 20 साल से काम कर रहे हैं, सारे लीगल कंप्लायंसेस पूरे हैं, फिर भी हम बैक टू पवेलियन हो जाते हैं। जैसा कि भाई जी ने कहा, मैं उनके बात का समर्थन पूरा करता हूँ, और एक स्मॉल फंड दे करके उन ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करने की आवश्यकता है जो अपने एरिया में ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे हैं। अगर वो अच्छा करते हैं तो फिर आप उनके साथ आगे की बातें को सोच सकते हैं। और ब्रेक द क्राइटेरिया फाइनेंशियल मैंडेटरी जो है आपका सर, उस पर थोड़ा सा तोड़ने की जरूरत है। ये जो बन गया है कि इतना ही जरूरत है कि आपका 1.5 करोड़ 2 करोड़ का टर्नओवर होगा तभी आपके साथ काम करेंगे, क्योंकि ऐसे में अच्छी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सब छूट जाती है। तो ये था सर। दूसरा सवाल था सर कि 20 साल में जो हम लोगों ने सीखा सोशल सेक्टर में, आज बिल्कुल बदला सा नजर आ रहा है। और अभी क्या मैंडेट है, क्या आगे का सोच है, कैसे लोग एक्सेप्ट कर पाएंगे उन ऑर्गेनाइजेशंस को जो पिछले 20-25 सालों में काम करके अपने आप को एस्टेब्लिश कर पाते हैं। कई लोगों के मतलब ओपिनियन में निकल के कि आप लोग तो दुकान चलाते, एक वर्ड जो निकल के आया इतना अंदर तक छू गया दिल में जाके कि आप लोग तो दुकान चलाते हैं। इतना समय गंवाने के बाद हम दुकान चलाने के लिए बैठे हुए हैं, और ये सब चीजें जब निकल के आती है CSR की तरफ से तो दिल टूट जाता है सर, सोशल सेक्टर में इतना समय गंवाने के बाद। तो ये सर थोड़ा बहुत था, और इसमें आपकी तरफ से क्या इनपुट हो सकता है और क्या सपोर्ट हो सकता है, ये अपेक्षा है बहुत ज्यादा जानने की। थैंक यू सर। थैंक यू।
देशमुख जी, आपको भी पूछना है कुछ? मैडम, मैं HP देशमुख महाराष्ट्र से काम कर रहा हूँ, वानी का मेंबर हूँ। युवा ग्राम विकास मंडल ऑर्गेनाइजेशन है हमारी, 38 साल से हम काम कर रहे हैं। बहुत उस्मानाबाद और बीड डिस्ट्रिक्ट रिमोट एरिया में हम काम कर रहे हैं। मैडम, हमारा कोविड से बहुत सारे प्रोजेक्ट बंद हो गए। हमारा टर्नओवर अभी 50 लाख आ गए सर, 50 लाख 1 CR का आगे था, लेकिन बहुत सारे CSR बोल रहे कि 1 CR से आगे होना चाहिए आपका टर्नओवर, लेकिन एक्सपीरियंस हमारा वो काउंट नहीं करते। तो ये भी एक हमारा प्रॉब्लम हो रहा है। और उस्मानाबाद बीड डिस्ट्रिक्ट में एक 10-15 छोटे स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, उसको भी सपोर्ट होना जरूरी है। हम लीगल कंप्लाइंस हमारी सभी है, लेकिन टर्नओवर थोड़ा कम है। तो ये सर को थोड़ा रिक्वेस्ट है कि इसमें थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए आप। जी सर, नाउ मिस्टर रितेश कैन respond to all this. Thank you. तो मैंने नोट किया हुआ है, तो I will quickly try to respond. कुछ छूट जाएगा तो please feel free to bring it to my notice. तो and not essentially in the order it was raised. So the first was कि क्या हम HIV और मलेरिया के क्षेत्र में काम कर रहे हैं? तो as of now नहीं कर रहे। हमारा ज़्यादातर हेल्थ एंड हाइजीन में फोकस वॉश और सैनिटेशन से रिलेटेड रहा है। हेल्थ केयर में 2-3 चीज़ों पर अभी हम लोग जो फोकस कर रहे हैं वो थोड़ा हेल्थ केयर रिसर्च पर है और इंफ्रा सपोर्ट के लिए हो रहा है। सो हॉस्पिटल्स को कैसे स्ट्रेंथन करें और इन सब चीज़ों पे हम लोग थोड़ा हेल्थ केयर पे काम कर रहे हैं। बट या सो एड्रेसिंग योर स्पेसिफिक क्वेश्चन, अभी HIV मलेरिया के लिए कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट हम लोग सपोर्ट नहीं कर रहे। सेकेंड, जो हर्ष जी ने 2 पॉइंट्स उठाया, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग एंड रिपोजिटरी बीइंग मेड अवेलेबल। तो इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग, मैंने ये भी बोला कि ये चैलेंज हमारे लिए भी है। और हर्ष सर, 150 पार्टनर्स हैं हमारे, प्रोजेक्ट्स करीब एक्टिव 400 हैं अभी ऑन ग्राउंड। सो हमारे लिए चैलेंज है। आप देख लीजिए, अगर ये एवरेज आप करके देखोगे तो आई नो सम ऑफ द बिग ऑर्गेनाइजेशंस which has the capacity to implement, तो वो up to 15 projects 2-3 organizations ऐसी हैं जो 10 से 15 प्रोजेक्ट हमारे लिए इम्प्लीमेंट करती हैं, बट लार्जली 2 से 3 प्रोजेक्ट ऑन एन एवरेज ऑर्गेनाइजेशंस आर इम्प्लीमेंटिंग। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस 1 प्रोजेक्ट पे भी काम कर रही हैं। दीज आर ऑर्गेनाइजेशंस जिनकी लेगेसी है, प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है और कैपेबिलिटी टू डिलीवर एंड मीट आवर रिक्वायरमेंट्स। और हमारे ही नहीं, सारे CSR की तरफ से वो डॉक्यूमेंटेशन, रिपोर्टिंग एंड ऑल दैट स्टफ, ये तो रिक्वायरमेंट आजकल बेसिक सी हो गई है। एंड आई फुली अंडरस्टैंड दी चैलेंज जो इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग है कि डोनर डिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन को खुद से इन्वेस्ट करके इतना कैपेसिटी बिल्ड करने के बाद अप्रोच करने में तो थोड़ी कठिनाई होती है, बिकॉज सेल्फ जनरेटेड फंड्स बहुत होते नहीं। सो इफ सो देयरफॉर वी हैव टू बिल्ड इन दीज कंपोनेंट्स विद इन द प्रोजेक्ट आल्सो, कि हम लोगों का कैपेसिटी बिल्ड कर सके, ऑर्गेनाइजेशंस को भी इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग में हेल्प कर सके। हमारे प्रोजेक्ट के अंदर में हम लोग कुछ शेयर्ड कॉस्ट्स का प्रोविजन रखते हैं, प्रोवाइडिंग सम फाइनेंशियल एड। इट मे नॉट बी टू मच, बट इट इज आई थिंक थोड़ा बहुत रहता है, जिससे कि विच कैन बी इन्वेस्टेड इन योर ओन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ एंड इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग। दूसरा जो पॉइंट जो इमर्ज होकर आ रहा है ऑन व्हिच इज रिलेटेड इज स्मॉल ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशंस आर बीइंग लेफ्ट आउट ऑफ द CSR फंडिंग। मैं सिर्फ बैंक की बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल ये एक इंप्रेशन आ रहा है दैट वो एक्सेस टू रिसोर्सेज उनको मिल नहीं पा रहा है। that continues to remain a challenge, and as I said कि we are conscious of this, हमें भी ये आ रहा है, because अगर हम ये this sector does not get revitalized in a way जहाँ पर लोग अवेलेबल हों, इम्प्लीमेंट करने का पोटेंशियल अवेलेबल हो, तो अल्टीमेटली वेयर वी विल गो, या तो हम 5-7 ऑर्गेनाइजेशंस को ही बड़ा करते चले, मतलब फंडिंग करते चले जाएंगे, नॉट एसेंशियली क्लेमिंग कि वो बड़ा होंगे, नहीं होंगे, बट एक्सपेरिमेंटेशन का स्कोप धीरे धीरे कम हो जाएगा। बहुत स्टीरियोटाइप प्रोजेक्ट्स के हम लोग मॉडल पे काम करने लगेंगे, तो हम लोगों को भी कुछ नए ऑर्गेनाइजेशंस की आवश्यकता होती है। बट अनफॉर्चुनेटली आज हम लोग अपने ये सब बेंचमार्क की वजह से कर नहीं पाते। तो वी आर थिंकिंग अबाउट हाउ डू वी वर्क विद स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस
It may not be big ticket projects, but maybe small grants or something like that is something that is internally, we're just thinking on how do we approach it. Right now, I don't have an answer to this. I just, I can share that we are conscious of this requirement. And we know that over a period of time, हमारे लिए भी ये बहुत बड़ा challenge होगा अगर हम sector को support नहीं कर पाए in their own capacity building. So I personally hear you, and I'll try to, ensure that there is something or some scope of collaboration and some, financial support to experiment or to implement, small ideas in a small geography. Maybe 2 village में करें, but कुछ अच्छा करके दिखा सकें. So we would look at that in coming days. Process for application is something, repository of results की जो बात हुई. So हमारे पास results का documentation करने के लिए बहुत एक strong infrastructure available है. We have a tech-enabled platform भी है, and we have an entire team which is called the impact team, जो सारे data को एक जगह करके उसको analyze करके अपने goals के against में उसकी mapping करके, if I can draw references when you say increase in income of farmers, हमने उसके लिए कोई टारगेट नहीं रखा, बट हम एनालाइज करके पहुंचना चाहते हैं, डबल हुआ, ट्रिपल हुआ, 50% बढ़ा, कहाँ एग्जैक्टली पहुंचे. तो ये पूरा फ्रॉम अ नॉलेज रिसोर्स पॉइंट ऑफ व्यू प्रोजेक्ट वाइज हमारे पास में है. वी डू एन इंटरनल एनालिसिस, व्हाट सक्सीडेड बेटर, व्हाट फेल्ड, एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आई एम गोइंग टू टेल यू इज व्हाट फेल्ड. फेलियर का एक्सेप्टेंस दोनों ही सेक्टर में नहीं है. आप किसी को पूछेंगे कुछ फेलियर हुआ तो कोई बताना नहीं चाहेगा, तो हम लोग पैचवर्क सक्सेस के लिए फिर लग जाते हैं उसको. बट देयर इज अ चांस ऑफ फेलियर आल्सो, नो. तो वो फिर हम लोग उसके अंदर थोड़ा सा लेफ्ट राइट करके, थोड़ा डेविएट करके उसको फिर सक्सेस बनाने के चक्कर में लग जाते हैं. तो आई थिंक वी आर आल्सो कॉन्शियस ऑफ दैट कि कुछ प्रोजेक्ट्स है, इट वोंट रीच द डिजायर्ड रिजल्ट्स. वी वोंट कॉल इट फेलियर, but it won't reach the results as per plan, but there will be learnings out of it. तो उसको भी हम लोग accept करें और पूरे sector भी accept करे wholeheartedly. Then एक proper, repository learning from others failures का हम लोग बराबर proverb है, English में भी लोग बोलते हैं learning from other failures, but failures discuss नहीं करेंगे तो learn कैसे करें? So those are also something that could be shared, applies to of course all the sectors. हमारी जो रिपोजिटरी ऑफ रिजल्ट्स है वो गवर्नमेंट के एमसीए के साइट पे अपलोड करना मैंडेटरी है. इम्पैक्ट रिपोर्ट्स आर मैंडेटरीली रिक्वायर्ड टू बी रिपोर्टेड ऑन द वेबसाइट. सो एचडीएफसी बैंक के सीएसआर पेज पे आपको प्रोजेक्ट वाइज रिपोर्ट्स कुछ मिलेंगे. और अभी बिकॉज ये जो रूल्स इम्पैक्ट असेसमेंट वाला आया है दैट वाज इन 2021, सो ओवर नेक्स्ट 3-4 ईयर्स में मैं समझता हूँ कि काफी अच्छा रिजल्ट, उसकी प्रेजेंटेशन, उसके एनालिसिस वगैरह, नॉट ओनली फॉर अस एंटायर सीएसआर सेक्टर बिकॉज इट इज नाउ आल्सो मैंडेटेड टू अपलोड. तो वो सारे रिपोर्ट्स एक्सेस होंगी, तो उसकी एक रिपोजिटरी तैयार की जा सकती है. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन वो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल इंफॉर्मेशन को लेकर रिपोजिटरी रेडी कर सकते हैं, एंड मे बी बेटर इक्विप्ड फॉर दैट. Next question was on process for application. तो application is basically expression of interest है, then there is a due diligence, एक प्री ड्यू डिलिजेंस है. प्री ड्यू डिलिजेंस के बाद में देयर इज अ ड्यू डिलिजेंस मैनेज्ड बाय अ थर्ड पार्टी. वो लिंक के अंदर में लॉट ऑफ थिंग्स आर काइंड ऑफ लुक्ड एट, नॉट ओनली बैलेंस शीट बट ओवरऑल गवर्नेंस का प्रैक्टिसेस कैसा रहा है, फाइनेंस मैकेनिज्म क्या है, अपनी इंटरनल प्रैक्टिसेस कैसी रही हैं, पॉलिसीज कैसी है. तो ऑल ऑफ दैट गेट्स एनालाइज्ड. हु आर द बोर्ड मेंबर्स, व्हाट आर देयर क्रेडेंशियल्स, व्हाट आर देयर कंट्रीब्यूशन, what are their involvement in day-to-day operations. So ये सब चीजों को एनालिसिस करने के बाद में an organization is onboarded. It takes about good safe to say about 45 days to 2 months for an organization to get impaneled to be considered for working with us. उसके बाद हम लोग जो काम करते हैं वो हम लोग प्रोजेक्ट को फंड नहीं करते. लाइक यू सेंड मी अ प्रोजेक्ट एंड वी विल सी, वैसा नहीं है. We participate, we say we co-create projects. तो we first decide कि भाई इस organization पे साथ में हम लोग काम करेंगे because there is an alignment. हमारे goals के में वो भी काम कर रहे हैं, तो there is an alignment. Based on that onboarding होती है. onboarding के बाद में we start
developing the project, हमारा भी input आता है, आपका भी input आता है. Maybe our team member will go to the field, or they may not go to the field, but they do an analysis. आपको presentation करना होगा and all of that. So project development in itself is a participatory process in the sense that we want to be involved in the entire process of what is being planned to be achieved in next 3 to 4 years. So in a nutshell, this is what it is. And my alma mater from XISS talked about learning for career growth. Of course, very important. NGOs में learning, जिसने भी आपको feedback दिया था वो बहुत सही feedback दिया था. So अगर आप practice ground पे जाके नहीं करते हैं तो you won't be able to relate. Then not really making any comment on anybody else, but CSR को वो एक visual framework में हो, उस तरीके से नहीं होगा. ग्राउंड पे काम करना जरूरी है. इट इज नॉट फॉर लॉन्चेस कि लॉन्च कर दिया, वो उसका फोटो आ गया. तो वहां तक से ज्यादा नीचे आप तभी जा पाओगे जब आपको ग्राउंड की अंडरस्टैंडिंग होगी, और ग्राउंड की अंडरस्टैंडिंग एनजीओ में काम करके ही आती है. आई हैव ऑल्सो स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम वर्किंग फॉर एनजीओ, और सीएसआर में भी काम करने पर भी डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन में ही रहा हूँ लार्जली. सो वन हैज दैट अंडरस्टैंडिंग, एंड I can definitely from my experience tell you that single most important factor that helps you judge the projects that are submitted to you, that helps you to relate with the projects, is when you have learned it on ground. So thoda time dena is essential. Then that's about it. Small funds ki maine baat kar liya. Breaking the financial criteria, there are certain exceptions. If it's a very good idea, we can look at some exceptions, but otherwise they still are there, but we are conscious of that requirement. So hopefully we will design a strategy or create a program in future that will help changing the ecosystem, particularly with the small grassroots organizations. So I think I am able to cover all the questions, and I have another meeting that will start in a few minutes actually. So over to you, Shabin ji. Yes. Thank you very much. Sorry, we have taken more time than we had asked for, and it has been very comprehensive and very informative and helpful lecture. हर्ष जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? Let us say thank you to him. हाँ, नहीं, thank you very much. Actually बड़ा interesting conversation हुआ, इसीलिए समय से आगे चला गया. तो थैंक यू रितेश जी. एंड क्योंकि मैं और अशोक भाई एक जैसे ही सवाल उठा रहे थे, तो मैं अशोक भाई के साथ बात करके वी विल अप्रोच रितेश एंड सी दैट हाउ वी कैन collectively find to some solution to these two issues. Thank you everyone, and please joining us. Thank you. And we shall be uploading this lecture on the website. Yes. सब देख सकते हैं, उसमें सब कुछ रहेगा. अपने साथियों को भी दिखा सकते हैं बाद में. जी. Okay. Thank you. Thank you so much. डिफरेंट सीएसआर के साथ भी ऑर्गेनाइजेशन हो, जैसे आज एचडीएफसी के साथ हुआ, कल जी जरूर. Thank you so much, Shabin ji. Thank you so much, Harshji. Thanks everyone. Thank you, Ritesh ji. Thank you very much. का नंबर मिल जाता तो जी दे देंगे. थैंक यू मैम. रितेश जी से पूछ करेंगे. पूछिए. Okay, thank you so much. And thank you everybody for joining. Thank you very much. Have a good day everyone. Bye. Thank you so much. Thank you Ritesh ji. Thank you. Thank you sir.